Dear students, today we will discuss about relation between potential and electric field at a point in an electric field. What is the relation? Our established relation between electric field and potential difference at a point of electric field. हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच रिलेशन एस्टेब्लिश करना है जो कि किसी एक पॉइंट पर जो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में सिचुएटेड हो. नाउ वी कंसीडर ए टेस्ट चार्ज तो हर बार लेते हैं अपन. नाउ वी कंसीडर ए टेस्ट चार्ज Q naught is placed at a point P in the uniform electric field E of a point charge Q at a distance R from it. Let P and Q be two adjacent points separated by distance dr. We consider a test charge, positive test charge Q naught, which is placed in uniform electric field E, and this uniform electric field E is produced by a point charge plus Q. पॉइंट चार्ज प्लस क्यू मतलब ये क्या कह रहे हैं कि हम एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को पॉइंट पी पर रखते हैं. पॉइंट पी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई में सिचुएटेड है और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस क्यू चार्ज के कारण क्रिएटेड है. पॉइंट पी की क्यू से डिस्टेंस, सोर्स चार्ज क्यू से डिस्टेंस, स्मॉलर डिस्टेंस आर है. अगेन we suppose two adjacent points P and Q which is situated at a smaller distance dr. फिर हमने कहा कि इसी लाइन पे टू एडजेसेंट पॉइंट P and Q हैं जो एक दूसरे से स्मॉलर डिस्टेंस कितने पर हैं, dr पे हैं. यदि if the intensity of electric field, if the electric potential difference between P and Q is dV and amount of work done, smaller amount of work done to displace point charge from P to Q, dr displacement without accelerate test charge is dW, then dV is equal to dW upon Q naught according to definition of potential, electric potential. हम कह रहे हैं कि हमारे पास हमने एक टेस्ट चार्ज Q naught लिया जो किसी सोर्स चार्ज Q की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट P पर सिचुएटेड है. पॉइंट P सोर्स चार्ज से r डिस्टेंस पर है. अगेन वी सपोज टू एडजेसेंट पॉइंट्स P and Q which is closer and situated at a smaller distance dr from each other. Now we consider again electric potential difference. Our potential difference between PQ is dV, and if dW is the amount of work done, to displace test charge P from Q, to displace test charge Q naught from P to Q at a smaller distance dr, then dV will be equal to dW upon Q naught. Now we calculate dW and substitute. Since test charge Q naught is placed in the uniform electric field E, since test charge
Q naught is placed in the electric field E, so it experiences a force that will be equal to F equal to Q naught E. When we displace this test charge from P to Q, then required external force will be equal to minus Q naught into E. So when we displace test charge Q naught from P to Q, then required external force, external force to move test charge from P to Q will be equal to this force F equal to minus Q naught E. Hence, since test charge Q naught is displayed a smaller distance dr by the against the force F equal to Q naught E. So, a smaller amount of work done dW is equal to force into displacement. Now substitute value of external force minus Q naught E into dr. Again, by cross multiplication we get dW upon Q naught is equal to minus E into dr. Since dW upon Q naught is equal to dV, since dW upon Q naught is equal to dV, then replace dW upon Q naught dV. So we get by cross multiplication E is equal to minus dV upon dr, and dV upon dr, rate of change of potential with respect to R, rate of change of potential with respect to R is known as potential gradient, and it is equal to intensity of electric field at a point. So intensity of electric field at any point of electric field will be always equal to potential gradient, is always equal to negative potential gradient. Here negative sign shows the direction of electric field is always along the decreasing potential. It shows direction of electric field. Minus sign shows the direction of electric field which will be always along the direction of decreasing potential. ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं, फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, ध्यान से सुन लो. कह रहे हैं हम कि हमारे पास क्या है, हमने सपोज किया कि एक टेस्ट चार्ज है, उस टेस्ट चार्ज को बिना लिए हम काम कर नहीं सकते. तो टेस्ट चार्ज को हमने कहा कि ये किसी पॉइंट P पर सोर्स चार्ज Q की यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पर सिचुएटेड है. सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज की डिस्टेंस R है, और इसी लाइन पर टू एडजेसेंट पॉइंट P एंड Q है, जो कि जिनके बीच का एक स्मॉलर डिस्टेंस dr है, जिनके बीच का स्मॉलर डिस्टेंस dr है. सपोज potential difference between P and Q is dV. हमने मान लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, dV. अब हम कह रहे हैं कि if टेस्ट चार्ज Q naught is displaced from P to Q a smaller distance dr, and if to do so amount of work done is dW, then dV will be equal to dW upon Q naught. Now we calculate dW. Since Q naught is placed in the electric field, in the uniform electric field E, so it experiences a force F equal to QE, and when we want to displace test charge from P to Q, then external force will be required.
and external force, required external force will be equal to applied force, but its sign will be different. So required external force F equal to minus Q naught E. Now displacement is dr and applied external force is F. So a smaller amount of work that dW should be F into dr, force into displacement. So dW is equal to, now substitute value of F, we get dW is equal to minus Q naught E into dr. तो Q naught को हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इधर ले आए, तो dW अपॉन Q naught इक्वल टू माइनस E इंटू dr, while dW upon Q naught is equal to dV. So dV is equal to minus E into dr. By cross multiplication, we can find out the value of E at the point P. E is equal to minus dV upon dr. Since dV upon dr shows the rate of change of potential with respect to distance. dV upon dr is the rate of change of potential with respect to distance. It is called potential gradient. Hence, intensity of electric field at any point of electric field will be always equal to negative value of potential gradient. So intensity of electric field at any point of electric field will be always negative value of potential gradient. Here negative sign shows the direction of electric field, which is always aligned or which is always in the same direction of decreasing potential. Okay, ये था रिलेशन E और V के बीच में. यदि हमें E की वैल्यू मालूम हो तो इसी रिलेशन से हम V को भी, पोटेंशियल को भी फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे, वो देखो इधर. Again, if electric field is known by us, then we can find out potential. Since vector E is equal to dV upon vector dr, displacement and intensity of electric field is both are vector quantity, while V is a scalar quantity. So we can write dV is equal to vector E bar dot d bar. If V1 and V2 are potential at position vector r1 and vector r2, then integrating equation 1 both sides between r1 and r2. यदि हम मान लें कि dV इक्वल टू ई बार डॉट डी आर तो मिल गया, यदि हम सपोज करें कि किसी दो पोजीशन वेक्टर पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिस्पेक्टिवली V1 एंड V2 है, V1 एंड V2 रिस्पेक्टिवली है, तो यहाँ पर जब V1 V2 R1 R2 पोजीशन वेक्टर पर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो दोनों साइड में कर दिया हमने इंटीग्रेशन V1 इंटीग्रेशन ऑफ dV फ्रॉम V2 V1, और जो पोजीशन वेक्टर है इंटीग्रेशन ऑफ E बार डॉट डी आर बार फ्रॉम R2 बार टू R1 बार. Integration of dV will be V, and substitute this value, we get V2 minus V1 is equal to integration of R1 bar E bar dot D bar from R1 bar to R2 bar. अब हम सपोज करते हैं कि सपोज R1 जो है वो इन्फिनिटी को, वी टेक R1 बार एट इन्फिनिटी. यदि R1 बार किसका पोजीशन वेक्टर है, इन्फिनिटी का, जब ये इन्फिनिटी पे होगा तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल कितना होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, देन V1 इज इक्वल टू जीरो. एंड नाउ सपोज R2 इक्वल टू R1 इक्वल टू इन्फिनिटी ले लिया, R2 पोजीशन वेक्टर ऑफ R2 इक्वल टू R ले लें हम R बार, तो क्या हो गया, एंड V2 को हमने शो कर दिया VR से, तो VR इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E बार डॉट dr, इंटीग्रेशन ऑफ E बार डॉट dr फ्रॉम इन्फिनिटी टू R बार. अर्थात हम
यदि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें मालूम है तो हम पोटेंशियल सॉरी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट होता है।